And now we are going to discuss the third stage, which is about its accounting. And when we do accounting treatment of impairment loss, what do? We write down the asset to its recoverable amount with the amount of impairment loss. And here we see that this is the third stage in which we are going to discuss accounting to write down the asset which has been impaired. Okay. So after doing the impairment test, once when we identify that yes, there is a loss which is impairment loss, तो उस impairment loss को अब हमने recognize करना statement of profit or loss में as an expense. Okay, with an accounting entry. What would be the accounting entry there? Yes, impairment loss would be debited and accumulated impairment loss credited. यहां थोड़ा सा रुक जाते हैं. Depreciation की क्या accounting entry सीखी थी हमने? That was depreciation expense debit and accumulated depreciation credit. ये सीखी हुई है ना? अब इसको देखिए, मिलती जुलती है ना? So there's nothing to memorize this accounting entry. Just एक analogy बनाए and put your analogy over here. Impairment loss is an expense and accumulated impairment loss is contra to asset. That's why we are giving credit effect to it. Contra to asset. इसने asset में से minus होना है. तो ये credit impact asset में से minus होने के लिए है. Debit impact profit loss में expense के तौर पे show होने के लिए. Alright? Well, एक example देख लेते हैं इसको. Very simple example. Example is that there is a machine which is being carried out in the balance sheet, in the statement of financial position at 300,000. ये carrying amount है. Impairment test indications हुए, उस internal और external indicators पे based हमने उसकी assessment की, recoverable amount की पता चला कि जनाब इसकी recoverable amount carrying amount से कम है. And how much is that? 275,000. अब तो ये impair हो गया asset. इसको अब हम राइट डाउन करेंगे. कैरिंग अमाउंट को नीचे लेकर आएंगे रिकवरेबल अमाउंट पर. विथ हाउ मच अमाउंट? यस, 25,000 इज द इम्पेयरमेंट लॉस. गॉट इट? अकाउंटिंग एंट्री अभी हमने सीखी. इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी डेबिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस विल बी क्रेडिटेड. दो टी अकाउंट बन रहे हैं. एक आपका इम्पेयरमेंट लॉस का, उसमें 25,000 डेबिट पे नजर आ रहा है, और एक accumulated impairment loss, उसमें 25 क्रेडिट पे नजर आ रहा है. टी अकाउंट में देख लें या डेबिट क्रेडिट में देख लें, इज द सेम थिंग. ओके, वेल, अकाउंटिंग एंट्री के बाद, लेजर में पोस्टिंग के बाद, व्हाट यू डू, वी हैव टू प्रेजेंट इट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as well as in the statement of profit or loss. Okay, तो statement of profit or loss में ये आपका expense नजर आ रहा है. 25,000 will be appearing as an expense in the statement of profit loss. Okay, and there will be a presentation in the balance sheet. And what's that? In the balance sheet or in the statement of financial position on a specific date, obviously. Asset जो 300,000 का था, उसमें से आप accumulated impairment loss जो है माइनस करेंगे, एंड यू विल सी कि अब उसकी नेट बुक वैल्यू 275,000 पर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है. दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग डाउन योर एसेट फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 300,000 टू द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 275,000, which is obviously producing an impairment loss that we have in fact presented in the profit or loss as an expense side. So this is the whole story of impairment, accounting for impairment loss. Okay, thank you.